Hello children, how are you? You are doing fine? Okay. आज मैम से क्या बात करेंगे? मैम told you you have to do your work yourself. मम्मा से नहीं कराएंगे, अपना काम खुद करेंगे. मैम has told you ना. अब ये बताओ मुझे कितने बच्चे खुद काम कर रहे हैं? आपको अपने टॉयज खुद रखने हैं, अपनी खाने की प्लेट किचन से खुद लानी है. यू हैव टू टेक योर सेल्फ ग्लास ऑफ वाटर. और उल्टा यू हैव टू हेल्प मम्मा. मम्मा लेट मी हेल्प यू. जब मम्मा खाना बना रही होती है, मम्मा से खाना लेके सबको सर्व करना है. दादा को, दादी को, पापा को, जो भी है घर में. और अपना खाना खुद खाना है. ये नहीं कि ऐसे बैठ के और मम्मी आपको खाना खिला रही है. नो, यू हैव टू ईट योर फूड योरसेल्फ. ओके. एंड हेल्दी फूड. चपाती, वेजिटेबल, दाल, राइस, यू हैव टू ईट एवरीथिंग. तभी तो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और इस कोरोना वायरस को भगाएंगे, है ना. सो यू हैव टू ईट हेल्दी फूड एंड डू योर वर्क योरसेल्फ. ओके. मैम के पास कैमरा लगा है, पता है ना, मैम को सब दिखता है कि कौन क्या कर रहा है घर में और क्या नहीं कर रहा. ओके. चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. ओके, वी हैव डन दिस. A. This is small a. Small a. A says a. मैम ने साउंड बताई थी ना. A says a. Arrow, एप्पल. और ए से क्या होता है? एरोप्लेन, आम, बहुत कुछ होता है ना. चलो, ए. दिस इज ए. ए सेज ए. सब मैम के साथ बोलेंगे. ओके. नाउ दिस इज बी. स्मॉल बी. बी सेज ब. बी सेज ब. बी फॉर बॉल. और क्या होता है बी से? बी से बैट, बेल, बस, बैग. There are so many things with letter B. Okay. A says a, B says ba. Now this is C letter. Now this is a small c. C says ka. C says ka. C for cake. C says ka. A says a, B says ba, C says ka. Okay. Now this, which letter is this? ये तो आपको आता है D. D. Now this is a small d. D says the. D says okay. Now this is a new letter. You have done this E. Okay. E for elephant. E for engine. E for egg. E for elephant. E for engine. E for egg. Now this is small e. This is small e. E says e. E says e. Okay, कैसे बोलेंगे e? E says e. Okay, now we will revise again. A says a. B says b. C says ka. D says the. E says e. E says e. Okay. Now we will do reading in our English book. This is your English reading book. Okay. Now you have to do reading. Okay. A for apple, aeroplane, ant. A says a. A says a. B for ball, B for bag, B for bus. B says b. B says b. Now you will speak sound along with the letter. Okay. C. C for cat. C for cake. C for car. C says k. C says k. D. D for doll. D for duck. D for dog. And D says duh. E for elephant. E for engine. E for eagle. E says e. E says e. Okay. Now, dear parents, last time also I told you, you have to make your children learn these sounds
it is very important. Okay, this is not that we are doing these sounds and children are not learning. You have to, in this we don't write anything. You don't have to write these letters. They will do it in the prep class, but they have to learn these sounds by heart. A says a, B says b, C says k. In prep class they will do writing through these sounds only. I am saying it again and again. Last time also I said it. Suppose cat, cat. Ma'am will not say cat, cat. Ma'am will say cat. So what is the sound of k? K is the sound of C. So child will write C. When he listens K, he will write C. K, A. When he listens A, he will write A. So it is very important that children learn these sounds when they are going in prep class. Bye beta, bye.